स्वागत है तुम्हारा। आज खुलेंगे मैथ्स का पिटारा, बजाएंगे एक्सपोनेंट्स पावर्स का ढोलक। मैं हूं अमित मोदक। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो ढोलक। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा अमेजिंग ये वीडियो है जिसमें हम लोग करेंगे एक्सपोनेंट्स पावर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये हमारा चैप्टर ग्रेड 7 और 8 में आता है। अगर अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को, and also press the bell icon so that you get all the notifications, or also do not forget to share with your friends. So students, क्या वेट कर रहे हो? जल्दी से लाओ एक नोटबुक एंड अ पेन so that we can start in very soon. So थोड़े से हेल्प के लिए let's see what are the formula can be helpful for you in this video. तो आज के क्वेश्चंस में कौन कौन से फॉर्मूलाज हेल्पफुल हो सकते हैं? सो लेट्स रिकैपिचुलेट दैट। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं जो हमारा यूजफुल हो सकता है, दैट इज x to the power m into x to the power n इक्वल टू x to the power m plus n, जहां पे हमारा बेस ले रहे हैं x, पावर्स ले रहे हैं m और n। तो अगर सेम बेस है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। अगर हमारे पास सेम बेस हो और x to the power m divided by x to the power n अगर डिवाइड हो तो हम लोग लिखते हैं x to the power m minus n। थर्ड, x to the power m ब्रैकेट n अगर लिखते हैं पावर तो यहाँ होगा x to the power m into n। फोर्थ, if we have 1 by x we can write in terms of x to the power minus 1. So if we have a positive power we can make it in terms of negative powers also. And few extra thing we can know that if we have a square root of x, that means x to the power 1 by 2, and if we have a cube root of x we can write it x to the power 1 by 3. Now here what happens, a lot of students get confused. If they see 3 it means they think as power 3. No, it's 1 by 3. Okay, so without much delay, let's move on to the first question of today's class. So find the value of k in the following: cube root of 8 to the power minus 1 by 2 is equal to 2 to the power k. So to find the value of k का value कितना होगा? Your options are A 1 by 2, B minus 1 by 2, C minus 1 by 3 and D 1 by 3. जल्दी से प्रेस करो पॉज बटन को और जल्दी से सॉल्व करके राइट ऑन द चैट बॉक्स व्हाट ऑप्शन यू आर गेटिंग। So students, let's see the solution. So here the right answer is B as minus 1 by 2. अगर तुम्हें k का वैल्यू minus 1 by 2 आया, so absolutely. So let's see how to solve this. ठीक है? So जिन बच्चों को नहीं हो पाया कोई बात नहीं, I will be helping you. So यहाँ हमारा 8 है, 8 का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 by 3, उसका पावर फिर से दे रखा है minus 1 by 2 इक्वल टू 2 to the power k। क्या करें सर? कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 into 2 into 2। सो 8 को लिखेंगे 2 to the power 3, उसका पावर 1 by 3 और करली ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ हमारा minus 1 by 2, इधर हमारा राइट साइड में 2 to the power k। So this 3 and 3 can be cancelled क्योंकि हमें पता है 3 into 1 by 3 हो जाएगा। So ये cancel होके 1। So what is left with 2 to the power minus 1 by 2 is equal to 2 to the power k. So therefore, since the bases are same, since bases are same on both sides, so we can write k is equal to minus 1 by 2. That is the right answer. Okay, so very well done students. Moving on to the next question.
Find the value of m such that 2 by 9 to the power 3 into 2 by 9 to the power minus 6 equal to 2 by 9 to the power 2m minus 1. What is the value of m? M का value निकालना है. Your options are A minus 1, B 1, C 2, D 3. This is a question of 2015. तो मैं जैसे प्रॉमिस किया मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके आऊंगा जो हमारे पिछले सालों में आए हुए हैं इन वेरी नाइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे. आई विल बी ब्रिंगिंग ऑन सच अमेजिंग वीडियोस जहाँ पे इनको सॉल्व करने पे तुम्हें कॉन्फिडेंस, and you will also get an idea what kind of questions are being asked in such competitive exams. So जल्दी से pause button को click करो और write the answer which you are getting on the chat box. Okay, so देखते हैं क्या आंसर तुम्हारा A आ रहा है, that is -1. Then you are absolutely correct. So very nice. So let's see the solution of this question. तो हमारे पास है बेस 2 by 9, देखो सब जगह है. So can we use the property 2 by 9 to the power, ये हमारा m हो गया, ये n हो गया. We can add it up. It's very simple. On the right side we have 2 by 9 to the power 2m minus 1. Now we can write, since base are same, what we can do, we can equate the powers. 2m minus 1, ठीक है. सो 3 minus 6 से ये हो जाएगा -3. ये -1 को इधर ले आएंगे तो +1 हो जाएगा, इधर रह जाएगा 2m. सो ये हो गया -2 is equal to 2m. So ultimately m is equal to -2 by 2. That gives us m equal to -1. So ये तो हो गया तरीका से सॉल्व. सर क्या करें अगर आंसर नहीं आया, अगर समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, वो कैसे होगा? सो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग ब्रह्मास्त्र लगा देंगे. सर ये क्या बोल रहे हो ब्रह्मास्त्र? सो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, that if we are not getting the value of n, so we can get the answer. हमें आंसर, राइट आंसर खोज निकालना है. कैसे? हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में अगर इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मानते हैं, सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड यू कैन गेट दैट 2 to the power, sorry 2 by 9 to the power 3 minus 6. ठीक है, 3 minus 6 कितना आ रहा है, -3. अब अपन को क्या सोचना है कि राइट हैंड साइड में ऐसा हम लोग m की वैल्यू क्या ले, यही तो सवाल है, m की वैल्यू क्या ले लें कि राइट हैंड साइड में भी -3 हो जाए. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट पुट द वैल्यूज जो जो है यहाँ पे, 1 डाल के देख लो, 2 डाल के देख लो, 3 डाल के देख लो, -1 डाल के देख लो, जिसमें वो आ जाए, जिसमें वो आ जाए. ओके, अगर टेक्निक से नहीं सॉल्व कर रहे, जिसमें आ जाए वही राइट आंसर. ओके, अगर टेक्निक नहीं समझ आ रहा है बस पुट कर दो. तो कई बार ऐसे भी हम लोग सॉर्ट कर सकते. ओके, चलो. सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है. 1 by x to the power b minus a bracket to the power a plus b into, ये डॉट मतलब into 1 by x to the power c minus b bracket to the power b plus c into 1 by x to the power a minus c bracket to the power a plus c. वेरी नाइस क्वेश्चन. देखो प्रीवियस ईयर के 2016 में आए हुए. योर ऑप्शंस इज A 4, B 3, C 2 और D 1. So press करो पॉज बटन को and solve it and get the answer. Okay, so I'm sure you have been able to solve it. So are you getting the answer as
D option as 1, then you are absolutely amazing and marvelous. So चलो फिर देखते हैं, जिनके नहीं हुए कोई बात नहीं, आई एम हियर, मैं सब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ईच एंड एवरी स्टेप बताऊंगा, सो डोंट वरी. सो हियर वी हैव 1 by x to the power b minus. अब इसको क्या करें सर, क्या करें, इससे कैसे सॉल्व करें? सो वी हैव लर्न कि हम लोग देखें 1 by x को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर -1. सो लेट्स ओके स्टूडेंट्स, तो देख यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, we can write it as x the power minus b minus a. Okay. स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा a plus डॉट मतलब मल्टीप्लाई. Similarly we can write it for c minus b bracket b plus c dot x to the power minus a minus c bracket a plus c. So students, what we can get, यहाँ पे क्या मिल सकता है हमें, माइनस बी और माइनस माइनस प्लस ए. सो माइनस बी प्लस ए, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस आ रहा है और माइनस बी आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास माइनस ऑफ बी माइनस ए है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस ए. सो अल्टीमेटली लिख सकते हैं ए माइनस बी. सिमिलरली यहाँ पे हमारा इसका a प्लस बी पावर हो जाएगा, और इसी तरह से ये हो जाएगा हमारा b माइनस सी पावर हो जाएगा b प्लस सी डॉट x टू द पावर c माइनस a और पावर हो जाएगा a प्लस सी. ओके, a प्लस सी को हम लोग c प्लस a भी लिख सकते हैं. नाउ a माइनस बी, यू कैन सी, यू कैन चेक हियर, देखो यहाँ है a माइनस बी, यहाँ है a प्लस बी, पावर्स है आपस में, so they get multiplied, and now we know identity x plus y into x minus y is x square minus y square. This is the identity, so we can use here it as a minus b into a plus b, that gives a square minus b square dot or multiplied. Similarly b square minus c square हो जाएगा. Similarly x to the power हो जाएगा c square minus a square. Now what we can do is, we have same base, we can add it up, a square minus b square plus b square minus c square plus c square minus a square. तो देखो ना, we can cancel it out. देखो यहाँ पे कितना amazing हो गया, a square sir cancel with a minus a square, minus b square plus b square cancel, minus c square cancel. So what is left with, क्या बच गया, what is left with, so we are left with x to the power 0, that gives us anything power 0 is 1, so we get the right answer as 1. Okay, very amazing. So students, let's move on to the next amazing question. So here we have, if 243 to the power 0.13 into 243 to the power 0.07 whole divided by 7 to the power 0.25 into 49 to the power 0.075 into 343 to the power 0.2 equal to 7 by 3 whole power 2x. And what's the value of x? What is going to be the value of x? जल्दी से सॉल्व करो, and what option you are getting जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी लिखना, whether you are getting a 0, b 1, c minus 1 by 2, d 1 by 2. Okay, so let's see what the right answer you are getting. So if you are getting minus 1 by 2, very very fantastic, बहुत ही सुंदर. So काफी टफ था नहीं, लेट्स सी कैसे आया होगा आंसर. हाँ, कुछ लोगों को टफ लग रहा है, नहीं ये तो आसानी से आ जाए. देखते हैं कैसे सॉल्व करें. तो सर हिंट कैसे मिलेगा, हिंट मिलेगा ना,
यू हैव, देखो 7/3 इधर है, राइट साइड में हमारा 7/3 है, यहीं से इंट मिलेगा। क्या सर इसको हम लोग ला सकते हैं? हाँ ला सकते हैं उसके फॉर्म में। सो 243, अगर हम लोग 243 को लिखे तो लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243। वी कैन राइट 3 टू द पावर 5। उसी तरह से 343 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, दैट इज 7 टू द पावर 3। एंड 49 यू कैन राइट 7 टू द पावर 2। ओके, सो यहीं से तो हमें ट्रिक मिलेगा। Okay, 243 can be write as 3 to the power 5 whole bracket 0.13 into 3 to the power 5 whole bracket 0.07 divided by 7 to the power 0.25 into 7 to the power 2 and 0.075 into 7 to the power 3 0. So we can solve it. 3 to the power 5 into 0.3 ये मिल जाएगा हमें 0.65। मल्टीप्लाई करेंगे ये मिल जाएगा हमें 0.35 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 0.25 इंटू ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.150 इंटू 7 टू द पावर ये हो जाएगा हमारे पास 0.6। अब हमारे पास देखो क्या है कि ऐड कर सकते हैं, 0.65 को ऐड करेंगे 0.35 से। So if we add it up, what we are getting? 550, 6 plus 3, 9 plus 1, 10, carry 1, 1.0. Similarly, if we add it 0.25, 0.150 and 0.6, इधर कुछ नहीं है, we can put a 0. So ultimately add it up, you will get 6 plus 7, 7 plus 2, 9 and carry 1, 10. So 1.000. So we are getting the above 3. 3 to the power 1 is 3 only. 7 to the power 1 is 7 only. Okay. So on the right side, what we are having? On the right side, we were having 7/3 to the power 2x, right? We can write it down. 7/3 to the power 2x. So, are you getting any sort of hint? Yes, sir. We can just make it reverse to the power -1 and 7/3 to the power 2x. So, same base, -1 would be equal to 2x. So, ultimately x is -1/2. This is the right answer, students. Okay. So, very well done. Let's move on to the next question. Simplify. Simplify 5 into 8 to the power 1/3 plus 27 whole 27 power 1/3 whole bracket 3 and again a square bracket with 1/4. Let's see what answer you are getting by simplifying this. You have options A as 2, B 3, C 5, D 7. Once again I will say press the pause button and write the answer you are getting on the chat box. All right, so let's see what is the correct answer of this question. So on simplification, if you are getting 5, then you are absolutely correct. So how? So let's see that. So here we have 5 into, we can write 8 as 2 to the power 3 whole power 1/3 plus 27 can be written as 3 to the power 3 to the power 1/3, and we can give a, again let's say we can give it a curly bracket because after parenthesis we can put the curly bracket. Again power 3 and then again we have a square bracket to the power 1/3. So as we can see here 3 3 cancel, 3 3 cancel. So what we are getting? 5 into 2 plus 3, that is 5
5 to the power we are getting 3, and we have a whole square bracket to the power 1 by 4. So now the bases are same. So what we can write, 5 to the power 4, because nothing is there, 1 is there, 1 plus 3, 4, and we have 1 by 4. So 4, 4 cancel. What we are getting? 5 is the right answer. Very amazing, students, very amazing. So this was the last question. So here the question comes, and this would be a homework for you all. This question is going to be a homework for you. And I am going to acknowledge the name who is going to give the fastest, or we can say the first answer on the chat box. That what would be the answer of on simplification this expression, whether it's A, B, C or D. So I will be bringing such amazing questions, and stay tuned. So students, before I leave, so please share this amazing videos which are going to come in this channel, and also subscribe the channel, and also convince your friends to subscribe it, so that they also get the benefit the way you are getting here. So let's end here on video, students. Thank you so much. Bye bye. Take care.